Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. Class 4, this is your maths period and I am your maths teacher, Miss Faiza Tahir, and today our topic is LCM. So students, what is LCM and what does LCM stands for? So LCM stands for lowest common multiple, and you can also say least common multiple. Now students, what is the difference between HCF and LCM? Students, when we find HCF by prime factorization method, we actually multiply only common factors to find out HCF by prime factorization method. But when we find LCM by prime factorization method, we multiply common factors and non-common factors both. Okay. Now let's start our work. This is our C work, class work, and it's page number 46, question number 4, part A and B. Find the LCM of these pairs of numbers using the prime factorization method. And I am going to solve part A, and it is 18 and 24. Now students, first we have to find out the prime factors by using prime factorization method. Here we have 18. So 2 9s are 18. Now we have 9. 3 3s are 9. And now we have 3. 3 1s are 3. So here we have prime factors of 18. 2 into 2 into 3. These are the prime factors of 18. Clear? Now students, we have to find out the prime factors of 24. 2 12s are 24. Now we have 12. Now 2 6 are 12. Now we have 6. 2 3s are 6. And now we have 3. 3 1s are 3. So students, these are the prime factors of 24. Now students, 2 into 2 into 3. These are the prime factors of 24. Now our next step is to make loop of common factors. So the common factor is 2 because 2 is the same number, same factor of both the numbers 18 and 24. Again 2 का loop हमने बना लिया. Now we have 3 का loop बना लिया हमने. So the common factors are 2 into 2 into 3. 2 multiplied by 2 multiplied by 3. अब हमारे पास जस्ट ये एक 2 बच गया है. ये हमारा नॉन कॉमन फैक्टर, बिकॉज ये अकेला है, इसका कोई पार्टनर नहीं है, कोई लूप नहीं बन रहा इसके साथ किसी का भी, तो ये हमारा नॉन कॉमन फैक्टर है. अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को पहले लिखेंगे एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. उसके बाद हम नॉन कॉमन फैक्टर को लिखेंगे विच इज़ 2. And after that we will multiply all the numbers, all the common and non-common factors. 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 2s are 24. So students, 24 is the LCM of the pair of numbers. Okay. Now B part आप खुद solve करेंगे. And our next question is question number 5, part A and C. Find the LCM by prime factorization method, and the part C is 16, 48 and 96. Clear? Now let's start our work and let's solve it. And it is 16 here. So 2 8s are 16. Now we have 8. 2 4s are 8. Now we have 4. 2 2s are 4. And now we have 2. 2 1s are 2. So students, these all are the prime factors of 16. Now students, we have 48. 2 24s are 48. 2 12s are 24. 2 6s are 12. 2 3s are 6 and 3 1s are 3. After that we have 96.
248 ज़ा 96। अच्छा स्टूडेंट, 96 एक बड़ा नंबर है, मींस आपको नहीं समझ आती समटाइम्स कि 96 कौन से ऐसे प्राइम नंबर पे डिवाइड हो रहा है। तो ये ऑब्वियस है कि 96 में 6 जो है, लास्ट नंबर जो है इसका, वो इवन नंबर है, और कोई भी इवन नंबर जो होता है वो 2 पे इजीली डिविजिबल है। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 248 आर 96, देन वी हैव 48, 2 24 आर 48, नाउ वी हैव 24, 2 12 आर 24, नाउ वी हैव 12, 2 6 आर 12, now we have 6, 2 3s are 6, and now we have 3 3 1s are 3। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम सबके फैक्टर्स को राइट डाउन कर लेंगे जैसे कि हमने इधर किया हुआ है, और उसके बाद हमने लूप बनाना है। स्टूडेंट्स, हम लूप बनाएंगे उन नंबर्स का जो तीनों में कॉमन हो, मींस वो फैक्टर्स जो तीनों में सेम हो। यहाँ पे हमने 2 का लूप बना लिया क्योंकि 2 तीनों में कॉमन है। अब यहाँ पे हमने अगेन 2 का लूप बना लिया क्योंकि 2 तीनों में कॉमन है। फिर अगेन हमने 2 का लूप बना लिया बिकॉज इट इज़ कॉमन फैक्टर। अगेन 2, it is common, and after that student we have 3 तीनों में नहीं है, 3 सिर्फ 2 में हमें नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब हम 3 पेयर ऑफ नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि तीनों में कॉमन क्या है। जब हम तीनों में कॉमन जो नंबर्स होते हैं उसका लूप बना लेते हैं, आफ्टर डैट वी लुक फॉर द नंबर्स विच आर कॉमन इन द फैक्टर्स ऑफ बोथ द 2 नंबर्स। ओके, तो हम यहाँ पे 3 का लूप भी बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एलसीएम में कंडीशन है। एलसीएम में आप 3 का लूप बनाने के बाद, 3 नंबर्स के लूप बनाने के बाद अगर 2 में भी कोई 2 नंबर सेम आ रहे हैं तो उसका भी लूप आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आ जाएंगे कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे एक 2 रह गया, ये हमारा है नॉन कॉमन फैक्टर जो कि हम यहाँ लिख देंगे। आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई ऑल द कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, एंड बाय मल्टीप्लाइंग दिस common and non-common factors we will get our LCM which is 96. Clear? And A part आप खुद solve करेंगे, you have to do it by yourself. And for today our homework is class 4 question number 4 part C and D and question number 5 part B and E, and you have to do all this work on your sheets, C work and homework दोनों, both. Okay, so students, it's a very easy concept as you all know how to find HCF by prime factorization method. So I think it's not difficult for you to find LCM by prime factorization method, because there's a slight difference between finding HCF and finding LCM, and where that is you have to multiply common factors in HCF, and in LCM you have to multiply common and non-common factors both. So students, I hope you have enjoyed this concept. Take care. Allah Hafiz. फिर मुलाकात होगी आपसे. Okay.